Assalamu alaikum. Welcome to the next lecture on NLP. So we are meeting again after 1 week. So last week we had the midterm exam and we were not able to conduct the class on Wednesday. So this is the 17th lecture that we are going to deliver today. So we will continue with our discussion on transformer. We started the transformer before the mid, although that was not included as part of your testing in the midterm exam. So the transformer is a major architectural advancement in neural networks, and it's a key neural network architecture for NLP. So nowadays, much of NLP is based on the transformer. So in the last lecture on transformer, we had introduced the transformer and the core idea of the transformer, which was the attention mechanism. So today we will continue with the discussion on the transformer. We'll talk about the transformer block in general, the residual stream, and then we'll also briefly talk about position embeddings and then how to learn a transformer and then some other aspects about the transformer. Uh, if we have time, we will move on to mass language models, which are also based on the transformers. But if not, then that would be in the next class. All right. So I have shared my screen. Can you see my screen? So, so we will be discussing the transformer, which is an architectural, is a neural network architecture that was developed primarily for sequential data processing, and it is heavily used in NLP, which primarily consists of sequential data. So most, or I would say almost all large language models today are based on the transformer, uh, and almost all applications are also done using the transformer. So text classification. So for example, so language modeling, for example, text classification, uh, POS tagging, which we'll briefly alluded to before, NER, named entity recognition. These two applications we'll talk about a bit more later on in a couple of lectures. So for example, machine translation, summarization, QA, chatbot, you name it. So all of this is primarily based on the transformer and its variations. So that's why this is a major component of NLP today. Uh, its theory is based on neural networks as well as, of course, linear algebra. So we discussed the core idea last time, which was attention mechanism or attention head. So the idea of attention mechanism is that we develop a representation for each token in a stream or in a sequence based on the representations of other tokens in the same stream. So that in the same stream, then that's basically self-attention. You can also have cross-attention where you have uh, representations that are referring to representations of other streams. Of course, in the transformer, we are focusing on self-attention, the same stream. Okay? Uh, and this representation is based on the weighted combination of the representations of other tokens in the same stream. So the main building block of a transformer is a transformer block. So let me show you the block diagram. So you have an input here. Okay. So we will discuss these again briefly today. And then you have transformer blocks.
should just write block 1. Then we have block 2, and of course many blocks. Then we have block L. And then after the Lth block, which is the total number of blocks in the transformer, you have some final output layer, which could be a classification layer. It could be, for example, if you are doing uh, language modeling, so it's basically language modeling layer, so LM layer, which is also, by the way, a classification layer, as you know. Okay? So the input is the embedding for one embedding. So this is for the entire embedding. And usually this block, vertical block, starting from bottom to up, is for one token. And for another token, you have more or less an independent processing. So that is one of the key advantages of transformer. You can run it in parallel as we discussed today. Okay? And that was the reason why it became popular after the RNN. RNN were proposed initially for sequential processing, but they were inherently sequential in nature and they could not be parallelized. So the transformer can be parallelized and it can be applied to sequence information. Okay? So within a and by the way, for one token, as you move through, you can think of this as a residual stream. Although in the original terminology, this was a neural network with connections front and back, residual connections. But you can think of this as a stream. So in which we are doing processing. So this is a single transformer block. So so basically you have the input, which is of course an embedding, and then you have the layer norm. That input is normalized. After that normalization, you have the attention mechanism, which in general could be multi-head attention. Okay? And then after attention mechanism, you have again a normalization. Okay? And then you pass it through a feed-forward neural network. Okay? And after the feed-forward neural network, you get the final output of that transformer block, which we'll call H1 or HI. If you're talking about the ith token, so that would be HI. So this is the output of one transformer block. So this HI would go to block 2. The output of block 2 would go to block 3, block 4 until block L. After block L, you have another layer normalization, then goes through the output layer. Okay? So you can think of this as a stream that has been processed from input to output on a particular token, Xi. Okay? So layer normalization, attention, then of course you concatenate with the original input, which is also, this is where the residual names comes in. And then you have the normalization again, and then you have feed-forward neural network, and then the output for one block. And this block goes to the next block until the final output. Okay? So there are some equations written here. Let me write those equations on my notes, and I'll try to explain what those are. So we are talking about one transformer block. So usually we have, so you can think of various components of that block which work on the input stream. So, and those components will produce some outputs, which we call T, for example, for T for transformer. And we are doing this for the ith token. The subscript is I, and we are doing it, this is the first position of the block, of the component in the block. Okay? The superscript denotes the position of the component or processing in the stream.
within a block, I is representing that this is on the ith token. Okay. So at the start, we have basically layer normalization of xi. Okay. And by the way, x and t are vectors of length d. Okay. So in general, for example, if I want to write this, so embedding size is d, which is also sometimes called the model size for transformer, because this is the size that we maintain throughout the transformer. So in other words, this vector is of size 1 by d, so it's a row vector. Okay. And then of course we have n blocks, transformer blocks, capital L transformer blocks. Within each transformer block we have a attention heads, multi-head. So a of course can be greater than 1. ठीक है. So ये कुछ you can say constants or parameters of the transformer block. So L blocks हैं, or within each block you have a attention mechanisms. So for example, if we talk about the transformer that was proposed in 2017, uh, so I don't exactly remember, but so in that case, for example, A was, for example, 8. So there were 8 attention heads in each block, and the total number of blocks I think was 12. I'm not too sure. So total attention blocks was 12. Okay. And we'll come back to these numbers again. From these numbers, you can actually estimate the total number of parameters that are present in a neural network or a transformer. You might have seen this new transformer, for example, GPT-5 or 4 has, let's say, 400 billion parameters. How do you get those number of parameters? We'll see that today later on. Okay, so we are coming back to residual stream. So this is the first component of the residual stream within a transformer block. The second, TI2. So this is basically the multi-head attention. Okay, and this basically takes in as input all the T's for all the tokens. So TI, okay. So for example, T1 caret 1. So T2 caret 1 till T, and the total number of inputs to a transformer is n tokens, capital N tokens. Capital N is the total number of tokens that can be processed by a transformer in one go. Okay. So multi-head works on all of those because you have to take information from others. So that's why we have all these in the parameters. ठीक है. So T2 आपके पास जो है component जो vector T आया है, it is basically you can say the output of the multi-head attention mechanism, and we discussed this last time. And then T3 for a particular token I is basically adding T2 with the original. So this is where you have the residual concept. Ti2 plus xi. तो ओरिजिनल हमारे पास था जो अटेंशन का आउटपुट था उसमें xi फिर ऐड कर दिया हमने. ठीक है. एंड देन वी हैव टी आई का जो फोर्थ कंपोनेंट है ये फिर लेयर नॉर्म कर रहे हैं हम ऑफ Ti4. थ्री का पिछले का. ठीक है. एंड देन आउटपुट Ti का 5. दिस इज योर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क ऑफ Ti caret 4. ठीक है. दिस इज आउटपुट ऑफ फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क. ठीक है. एंड देन फाइनली वी हैव Hi. ठीक है. Which is the output of this transformer block. ठीक है. So which you can say caret 1. ठीक है. Is equal to, sorry, caret 1 is not there.
So this is generally T5, sorry, I5, the fifth output, plus again we are adding the input. ठीक है, तो ये टोटल आउटपुट है. एच आई इज द आउटपुट ऑफ वन ट्रांसफार्मर ब्लॉक. अब ये आउटपुट गोज टू द नेक्स्ट ट्रांसफार्मर एंड द होल प्रोसेस रिपीट्स. पहले लेयर नॉर्मलाइजेशन होगी, मल्टी हेड अटेंशन होगा, फिर हम ओरिजिनल ऐड कर देंगे इसके अंदर. ठीक है, and then we go to feed forward neural network. Before feed forward we have a layer normalization, and then feed forward के बाद फिर we get the HI. तो feed forward neural network भी last time हमने briefly discuss किया था, layer norm भी discuss किया था, and of course we discussed the attention mechanism. ठीक है, and this particular ordering of these components within a transformer is called the pre-norm transformer. So pre-norm matlab you have the normalization occurring before the attention and before the before the neural network, the feed-forward neural network. So there are also variations in which this normalization occurs after the attention and after the neural network. So दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, but this has become more popular, the pre-norm one. By the way, इन दोनों के बाद क्यों हम normalization कर रहे हैं? Because in ये दो components जो हैं, attention mechanism and neural network, these are the non-linear components. And these are the two components where learning occurs. These are the two components which we have parameters. तो लर्निंग हो रही है, नॉन लीनियरिटी है, वी वांट टू स्केल इट बैक टू some bounds using z-score normalization so that our optimization process goes smoothly. ठीक है, any questions so far? So a transformer consists of blocks. So we are going from bottom to upward. So इनपुट है नीचे, पहला ब्लॉक है. So पहले ब्लॉक के अंदर प्रोसेसिंग क्या हो रही है, नीचे से ऊपर मैंने वो T1 T2 T3 T4 T5 से और HI तक लिखी हुई है. ये पहले ब्लॉक की है. अब ये दूसरे ब्लॉक के अंदर जो HI यहाँ से निकला है वो दूसरे ब्लॉक में चले जाएगा, उसमें वही प्रोसेसिंग होगी. पहले हम लेयर नॉर्म करेंगे, फिर टेंशन करेंगे, फिर चौथे तीसरे जो until you go to the last block, and then after the last block you do another normalization and then go into the output layer, which could be a language modeling layer or a classification layer or so on. ठीक है, so any questions here so far? All right, okay, so we mentioned that a transformer was designed to replace the recurrent neural network, and a recurrent neural network was designed for processing sequential information. So a transformer is meant to process sequential information. But so far we have said that a transformer takes as tokens x1, for example, s2, x3 to whatever the total length of its input xn. And these are token embeddings in general. So token embeddings are embeddings for words. So for example, first word जैसे एक sentence आता है, so long and thanks for example. So the first word would be x1 would be so, the second one would be long, third one would be and so on. But for any other input, these same words may appear at different positions. Or in other cases, we don't really know how far is so from, for example, long, or how far is so from thanks. ठीक है, सो पोजीशन की इंफॉर्मेशन एज सच हमारे पास अभी तक हमने कोई मैकेनिज्म डिजाइन नहीं किया. सो वी विल नीड टू ऐड पोजीशन इंफॉर्मेशन. So far we have taken all of these things as independent vectors without any relation between them. So we need to add that relationship between them. Of course attention mechanism उनको relate करता है. x1 x2 को देखता है, x1 x3 को देखता है, x3 x4 को देखता है and so on. But जब x4 x3 को देख रहा है, we don't, it doesn't really know कि x4 x3 adjacent है.
ठीक है, इट्स जस्ट ए मैट्रिक्स पोजीशन दैट वी आर वर्किंग ऑन। तो ये पोजीशन हमको डालने के लिए उसकी भी हम कंसेप्ट एम्बेडिंग से लेते हैं। सो वी हैव ए टोकन एम्बेडिंग। So token embedding, you can think of this as, so if I want to give it a different name, uh, so we can say token embedding EI, ठीक है, and I put a token up as a superscript, ठीक है, for ith word. So basically token embedding for the ith token in the vocab. So I is the index, ठीक है. So I, depending on the index, let's say for so might be 300 और for long would be 1000. कोई इंडेक्स होगा जो आपने एक दफा फिक्स किया हुआ है, ठीक है. सो so that's a token embedding, but we also need to find a position, have a position embedding, कि ये वर्ड जो था आई, ये किस पोजीशन हमारी स्ट्रीम में आ रहा है. so let's me call that x I caret position. So embedding for the ith position in the input, ठीक है. So in other words, I would go from 1 to n, while in the previous case जो token embedding था, I would go from 1 to the total number of words in the vocabulary, and जो भी index आपने बनाया हुआ है वो होगा. ठीक है. So we will have, we have the original token embeddings and we have the position embeddings. अब इसमें there are various techniques out there. The simplest is absolute embeddings, and in this case we basically, for each position from 1 to n, we randomly generate a vector of size d. So of course, randomness would ensure that each embedding would be different from another embedding. Okay? But we allow this embedding to be updated as part of the training process. Okay? So randomly generate an embedding for each position I. Okay? And allow these embeddings to be updated during training. So that's one way of doing it. So by the way, before I mentioned there are two embeddings, token embedding है और एक position embedding है. तो यूजली हम इन दोनों को जब हमने अपडेट करना है, दोनों को हम सेपरेट भी रखेंगे, बट जब फाइनल हम इनपुट भेज रहे होंगे अंदर हमारे ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक के अंदर, हमारा जो एक्स आई होगा, इट विल बी द सम ऑफ दीज टू. इट विल बी ई आई टोकन प्लस ई आई पोजिशन, ये होगा. जो एक्स आई हम पीछे बात करते रहे ना, इट विल बी द सम ऑफ बोथ ऑफ दीज, simply the sum. Remember, both of these embeddings are of the same length d, 1 by d, रो वेक्टर्स हैं. तो हमने एक पोजीशन, हर पोजीशन की एक डिफरेंट एम्बेडिंग है, और हर टोकन की एक डिफरेंट एम्बेडिंग है. सो जस्ट मी गिव मी लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. सो फॉर एग्जांपल एक मैं सेंटेंस लेता हूँ. ही
studies at LUMS and she studies at LSE. ठीक है, अब ये एक इनपुट सेंटेंस है, इनपुट सीक्वेंस है, ठीक है। अब इसमें वर्ड स्टडीज आ रहा है। स्टडीज की जो एम्बेडिंग है एक वो एक कांस्टेंट होगी, स्टैटिक एम्बेडिंग होगी जो भी आप ले रहे हैं। तो दे विल बी एम्बेडिंग फॉर टोकन एम्बेडिंग फॉर स्टडीज, ठीक है। वट एवर दैट इज, कॉल दैट लेट मी कॉल इट जस्ट ई, ठीक है। बट देर इज a position embedding as well. So position embedding for, let's say, so position embedding for each position system. So पहला जो था he studies, so study जहाँ 2 पे आ रहा है वहाँ आपके पास जो x2 होगा, so for example जो x2 होगा, so this would be e plus e2 position. और आपका he studies at LUMS, that is 4 and she 6 5 6, so x 6 जो होगा उसमें वही ई आएगा, बट यहाँ पोजीशन एम्बेडिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट विल बी एबल टू डिटरमिन कि ये वर्ड वो वाला स्टडी सेम है, बट वन वर्ड इज अकरिंग एट द सेकंड पोजीशन, द सेकंड वर्ड इन द सेम सीक्वेंस इज अकरिंग एट द सिक्स्थ पोजीशन, ठीक है। सो दिस इज द मेन आइडिया ऑफ ए पोजीशन एम्बेडिंग। As I said, there are two approaches. Absolute embedding is हर का position के लिए आप random embedding बना लें and then you let it be adaptable in the learning process. So this approach is generally not very commonly used nowadays because uh, the primary reason is that since input streams can be of different lengths, there's greater chance that you will find words that appear at the smaller, uh, smaller sizes than words appearing at longer sizes. So there will be greater chance for learning a embedding at a lower position than at a higher position. ठीक है, so update for, let's say, e at position 1000 would be less common as compared to update for position 1. 1 position तो हर input में आएगी, 2 भी most में आएगी, but 100 या 1000 या 2000 कम कम inputs में आएगी, so they would not get updated as much as possible. तो ज़्यादा जो common use होता है वो relative position embeddings होती हैं, और इसके भी different तरीके हैं, so different approaches here. So, and in the book they have not gone into detail of those approaches, so I think I will also not go into those details. एक जो common शुरू में होता था was using sine and cosine functions to generate vectors for different indices. मतलब आपके पास let's say position index I, position 3 के लिए आपने कोई embedding generate करनी है, you have a function, some function that takes I and outputs an embedding, ठीक है। आप उसको 3 देंगे वो आपको एक वेक्टर दे देगा, 4 देंगे आपको एक डिफरेंट वेक्टर दे देगा, 5 देंगे एक डिफरेंट वेक्टर दे देगा, 100 देंगे एक डिफरेंट वेक्टर दे देगा, एंड वो इस तरह कंप्यूट कर रहे हैं यूजिंग यूजली कोसाइन एंड साइन, सच दैट दोज वेक्टर वुड कैन बी कंपेयर्ड। सो जो पोजीशन 1 का जो होगा इट विल बी मच क्लोजर टू पोजीशन 2 एज कंपेयर टू द वेक्टर फॉर पोजीशन 1000, ठीक है। So this approach is much more commonly used, where you generate embeddings and do not then adopt them, you fix them. ये adaptable नहीं है, but you generate them using some function which would take into account the position and
also be able to cater for the relative position, meaning that कि 1 और 3 और 1 और 5 का जो डिफरेंस है, इट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट कि 1 और 3 क्लोजर है, 1 और 5 ज़्यादा दूर है. ठीक है. So it means it outputs an embedding for the ith position, and then we use this uh, for our input. ठीक है. वो इनपुट में उसी तरह यूज करेंगे, जो भी आपका टोकन एम्बेडिंग होगा उसमें इफ दैट टोकन अकर्स एट द सेकंड पोजीशन, तो उसकी सेकंड पोजीशन की एम्बेडिंग में उसमें ऐड कर दें. इफ इट अकर्स सिक्स पोजीशन, तो सिक्स में ऐड कर देंगे उसके अंदर. और यही जो रिलेटिव पोजीशनिंग वाला है आइडिया जो है ना, इट हैज आल्सो नाउ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द एक्चुअल अटेंशन मैकेनिज्म. सो इन अदर वर्ड्स, जो अटेंशन मैकेनिज्म जो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसी के अंदर पोजीशनिंग का इंफॉर्मेशन डाल दें डायरेक्टली. सो रिमेंबर, जो प्रीवियसली हमने जब अटेंशन मैकेनिज्म देखा था, वी वर नॉट एबल टू cater for position explicitly. ठीक है. But you can add or modify that and cater position directly in the attention mechanism. If you do that, then uh, you don't need to update the input with the position embedding, because position would then be catered in the attention mechanism. तो ये तीन आप कह लें तरीके हैं. ऑल्दो जो ये जो तीसरा तरीका मैंने बताया, इस पार्ट ऑफ relative position है. एक absolute position है, which is less commonly used now, where you generate randomly then let it adapt during the training process. Then we have relative positioning, where you can generate those embeddings using some function like sine and cosine and some combination of them, or you embed or you incorporate positions within the attention mechanism, again using some functions. ठीक है. So what is the purpose of all of this discussion? So that the model knows कि ये word किस position में आ रहा है, किस sequence में, एक particular sequence में. जैसे ऊपर मैंने example दी, study जो है second position में भी था, six में भी था. So the model needs to know कि ये दो different positions हैं, not the same. ठीक है. So any questions? All right. So, so all of this discussion is from chapter 8 of your textbook. So I would strongly recommend that you should read this chapter. Uh, I think more than once, I would say, because this is a very important chapter. And then, of course, there's a lot of notation and details that you need to be aware of. Okay. So, and of course, v- view my videos as well, the last video as well as this video. Hmm. Okay. So now let's move on to parallelizing, the idea of parallelizing. So far we have talked about one token at a time. So you can actually process the entire input stream in one matrix operation or in matrix operations. And that is one of the advantage of the transformer. You can speed it up using GPU-based computers, vector-based computers. Okay? Okay. So as we said, we have n tokens in input stream. ठीक है.
capital N tokens in the input stream. So that's the size of the input block of a transformer. Okay, the input tokens. So far we said that we were processing one token at a time. So we wrote the equations for xi, small xi. Okay, and this small xi is the I token in the stream. Okay, and of course I is equal to 1 to n. Okay, and by the way, this I here is referring to the position in the stream. And of course, within that token, within this x, you'll have the token embedding and the position embedding. ठीक है, जो हमने पीछे डिस्कस किया था. ठीक है. So and of course इसका size क्या है? इसका size रो vector 1 times d. D is a model dimension that we talked about earlier. Usually this is 512, 1000, 12,000 depending on your model. ठीक है. So what we do is we can pack all of these vectors into one matrix, the capital X matrix. So this matrix is then of size capital N by D. So each now row of this matrix is one input to the transformer. ठीक है, जो पहला element, पहला row है, this is the first input to the transformer. Second is the second input. The nth is the nth input. तो ये सारे हमने ट्रांसफार्मर के जो n इनपुट्स थे वो हमने एक मैट्रिक्स में डाल दिए. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स यहाँ वो सारी वो कहानी पोजीशन एम्बेडिंग वाली पहले हो चुकी भी है. या लेट से आप पोजीशन एम्बेडिंग लर्न करना चाह रहे हैं तो वो आप फिर सेपरेट ई का मैट्रिक्स सेपरेट रखेंगे सो दैट यू कैन अपडेट इट. बट आई थिंक दैट्स लेस कॉमन, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स. आपको स्लाइड्स में या बुक में उसकी डिटेल्स दी हुई है. ठीक है. सो नाउ यू हैव दिस एक्स मैट्रिक्स and it turns out that you can do the computation in one matrix for the entire attention mechanism. So for example, let's say आपने layer normalization करनी है तो क्या करेंगे आप? पहला रो को आप लेयर नॉर्मलाइज कर लेंगे, सेकंड को कर लेंगे, थर्ड को कर लेंगे, फोर्थ को कर लेंगे सेपरेटली. सो नॉट ए बिग डील, आप कर सकते हैं लेयर नॉर्मलाइजेशन. ठीक है. व्हाट अबाउट अटेंशन मैकेनिज्म? अटेंशन मैकेनिज्म में जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, कुछ चीज़ें हमने निकालनी है, क्वेरी की और वैल्यू होती हैं उसमें. सो वी कैन डू दैट राइट अवे. फॉर एग्जांपल इफ यू रिकॉल, हमने क्या निकाला था? क्वेरी आई, स्मॉल क्यू आई वेक्टर एक्स आई मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू क्यू, कैरेट क्यू, द सुपरस्क्रिप्ट क्यू. ये था ना, डब्ल्यू एक्स आई इज द रो. नाउ यू कैन इजिली डू इट इन मैट्रिक्स फॉर्म. तो कैपिटल क्यू आपके पास आउटपुट मैट्रिक्स आ जाएगा. ये कैपिटल एक्स है, कैपिटल डब्ल्यू है और क्यू है. सो यू आर नाउ कंप्यूटिंग all queries vectors in one matrix computation. ठीक है. यू कैन फॉलो बिकॉज पहले एक्स आई भी रो था, अब कैपिटल एक्स भी रो वाइज है. सो यू विल गेट द कैपिटल क्यू एज रो क्वेरी वेक्टर्स. सो सिमिलरली फॉर ऑल द अदर ऑपरेशंस. तो की निकालने के लिए भी वही होगा, एक्स इंटू के, सॉरी, डब्ल्यू कैरेट के एंड देन वी इज इक्वल टू x into w caret v. ठीक है. All of this can be done in matrix operation because as you know each of these operations not dependent on the other. And then what do we have after this? If you recall, हम उसके बाद हम score निकालते थे for xi and xj. Score xi xj as basically the inner product of
सॉरी, ऑफ क्यू आई एंड के जे, ठीक है, डिवाइडेड बाय एस क्यू आर टी ऑफ डी के। ये आपका डायमेंशन था डब्ल्यू के का या डब्ल्यू क्यू का, ठीक है। इनर प्रोडक्ट normalized by the square root of the dimension of the W, Q and W, K matrices. So this is for one I. और ये भी सारे आप इकट्ठे कर सकते हैं वेरी इजीली। तो सिंपली वो क्या करेंगे, Q इंटू के ट्रांसपोज। बाय द वे ये जो T है, T इज ट्रांसपोज, इट्स नॉट ए सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। ओके, द मैट्रिसेस Q एंड K, ओके, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। So these matrices are for the attention mechanism. Uh, for each token, for each input position, we define three representations of that input. एक रिप्रेजेंटेशन हम कहते हैं वो क्वेरी रिप्रेजेंटेशन है, एक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं की रिप्रेजेंटेशन है, एक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं हम वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। एंड ऑल ऑफ दिस representations are obtained by projecting your input onto a parameter matrix W, the corresponding parameter matrix W, ठीक है। So W caret Q, superscript Q means this is the parameter for the Q vector. Similarly, W superscript K is the parameter for the K vector and so on. So हर एक पोजीशन की, हर टोकन की हमारे पास तीन रिप्रेजेंटेशन है, एक Q रिप्रेजेंटेशन है, K रिप्रेजेंटेशन है, V रिप्रेजेंटेशन। और Q और K रिप्रेजेंटेशन से हम उनकी सिमिलैरिटी निकालते हैं, which is used using the score and which is done through the inner product, ठीक है। एंड देन जो वी रिप्रेजेंटेशन है वो हम देखेंगे आगे जाके, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं वेटेड कॉम्बिनेशन के। तो ये अटेंशन मैकेनिज्म था विच वी डिस्कस लास्ट टाइम। ओके, so this score function you can also do it in a matrix form, which we have already written QKT. By the way, QK transpose, this is an n by n matrix, ठीक है। किस तरह, बिकॉज Q जो मैट्रिक्स था आपके पास, Q मैट्रिक्स कितना था, n by d था, ठीक है। और जो K ट्रांसपोज, जो K ट्रांसपोज पे क्या होगा, D टाइम्स n। So if you do this multiplication, you get an n by n matrix, ठीक है। So capital Q, capital K, capital V are each of those representations for each of the token position, and you do this multiplication, you get an n by n matrix, ठीक है। Of course, ये जो multiplication करेंगे, we have to normalize with square root dk as well, जो हमने ऊपर किया है। And then finally we compute the alphas, ठीक है। सो वो अल्फा मैं कैपिटल ए कह देता हूँ, ऑल्दो कैपिटल ए जो हमने पहले कहा था जो नंबर ऑफ अटेंशन मैकेनिज्म्स, यहाँ कैपिटल ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो दिस वुड बी द सॉफ्ट मैक्स विच वी डिस्कस लास्ट टाइम। सॉफ्ट मैक्स वही जो कंपटीशन है। अच्छा, इससे पहले एक काम करना है हमने, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, सो दिस इज एन बाय एन मैट्रिक्स, क्यू कैरेट टी, और इसको बेशक हम डी के से डिवाइड कर दें। सो लेट मी
make a new matrix, let's say, so say n by n matrix, so right. So what is happening in this n by n matrix? This is containing uh, the scores for taking the inner product of an I with the preceding as well as the following words. But since so far in this chapter we are focusing on a language model or auto-regressive language model which can only see words that appear before it, we will like to remember if we जो हमने इक्वेशन लिखी थी ऊपर, फॉर एग्जांपल वी, ओके लेट मी राइट इट, ए आई जो लिखी थी हमने फॉर एग्जांपल इज द सम फॉर ऑल जे, ठीक है, ऑफ अल्फा which was basically the your weight multiplied by vj where j is less than equal to I, ये हमने लास्ट टाइम कहा था, ठीक है। क्यों कहा था? बिकॉज we are talking about a language model where we have a word here j. That word can only see words that appear before it, and we can use that to predict the next word. We don't want it to see words after it. If it's able to see words after it, then obviously we are not doing language prediction. We already know it. We already have told the model what is the next word. Okay, so that's why we are looking at only the previous words at every position I. ठीक है। अब जब हमने ये मैट्रिक्स क्यू के टी किया इन दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, इसमें सारे हमने कंप्यूटेशंस कर लिए। बट इफ यू लुक एट द ऑर्डरिंग ऑफ दिस मैट्रिक्स, हमने फिर इसका जो कंप्यूटेशन अबव द डायगोनल है, दिस रिप्रेजेंट्स द वी दैट द स्कोर्स दैट अपीयर फॉर computations with words after that current position. So वो हमको नहीं चाहिए, we want to mask that. तो मास्क के लिए we will, since बाद में आप scores निकालते हैं, बाद में हम soft max लगाते हैं, तो उसके लिए हम in the matrix we say that we'll give them a very large negative value so that जब soft max निकालेंगे वो सारे जीरो हो जाएंगे। तो उसके लिए हम बेसिकली ये करते हैं, तो बेसिकली क्यू के ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय एस क्यू आर टी डी के, ये तुम्हारा पहला था। इसके अंदर हम एक मार्क्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। एम एम इज ऑल्सो ए एन बाय एन मैट्रिक्स with minus infinity for all with zeros uh, in the lower half and minus infinity all values above the diagonal। तो अपर हाफ में हम सारी नेगेटिव इंफिनिटी करते हैं, अब ये उसमें ऐड कर देंगे। तो व्हाट वुड हैपन इज जो क्यू के टी की जो मैट्रिक्स था उसका जो अपर हाफ था वो सारा माइनस नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और पहला हाफ तो ऑफकोर्स वही वैल्यूज रहेंगी जो उसके पास हैं। सो इन अदर वर्ड वी आर मास्किंग दैट, सो दिस मैट्रिक्स एम इज लाइक अ मास्किंग मैट्रिक्स। अब इसके बाद जब मैं अपना अप्लाई करूंगा सॉफ्ट मैक्स, now A, my alphas, which I call them the matrix A, would now be the row wise softmax of Q, K, T plus M.
तो सारे अल्फाज मेरे पास इस मैट्रिक्स ए में आ जाएंगे। एंड ऑब्वियसली इस मैट्रिक्स ए में जो अपर डायगोनल वाले सारी वैल्यू जीरो होंगी। जब आप सॉफ्ट मैक्स निकालेंगे एक रो का जिसमें रो में आगे अपर डायगोनल की वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी है, वो सारी जीरोज हो जाएंगे। ठीक है। So A is also an n by n matrix with zeros. By the way, of alphas. ठीक है, वो जो अल्फाज थी in upper diagonal, upper half, sorry, upper half। ठीक है। सो अब आपके पास ये सारी अगेन पूरे मैट्रिक्स में ये कंपटीशन आ गई, इंडिविजुअली नहीं कर रहे। एंड देन फाइनली वी आर लेफ्ट विद द लास्ट। ठीक है। तो ये अगेन नोटेशन का थोड़ा सा इशू आ रहा है, बिकॉज ए हमने आगे टेंशन के लिए भी यूज करना है। तो इसको मैं अल्फा मैट्रिक्स कह देता हूँ। ठीक है। नोटेशन ओवरलोडिंग काफ़ी हो रही है। बुक में भी रिपीटेडली वैसे ओवरलोड किया हुआ इन्होंने, बट वहाँ थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ज़्यादा होती है तो यू टेंड टू फॉलो मच मोर इजीली। तो सो दिस इज एक्चुअली अल्फा। तो फाइनल हमारे पास जो अटेंशन ए था, जो हमारे पास ए आई था, बट नाउ ऑल दोस एज इन दिस वेक्टर ए। नाउ दिस ए इज वेक्टर, ऊपर अल्फा वो मैट्रिक्स था। वी कैन नाउ सिंपली कंप्यूट दिस बाय दिस ऑपरेशन। अल्फा जो ऊपर हमने निकाला है एज ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय योर मैट्रिक्स वी। ठीक है। सो हेयर ए इज ए वन बाय डी वी वेक्टर। आई सॉरी, वन नहीं होगा, एन फॉर बिकॉज वी आर डूइंग फॉर ऑल। एन बाय डी वी बिकॉज वी का जो साइज है वो यहाँ आएगा। सो दीज आर नाउ ऑल द outputs of all the attention heads A1, A2, sorry, attention head 1, attention head 2, attention head, sorry, for each token in the input stream A1, A2, A3, A4, but for one attention head. If you have multiple attention head, ये सारे multiple होंगे आपके पास, वो बाद में आप concatenate करेंगे। By the way, so again this is for a single attention head. For multiple attention head, ये आपके पास multiple equations होंगे, for each of them would be separate and then you can later on concatenate them। उसके लिए फॉर एग्जांपल बुक में ये जो ए मैंने लिखा है इसका भी एक सुपरस्क्रिप्ट डाल के इन्होंने सी डिनोट किया हुआ है फॉर ईच अटेंशन मैकेनिज्म। ठीक है। सो अगेन टू रिकैप, सो पैरेललाइजेशन में एसेंशियली हमने जो इंडिविजुअल प्रोसेसिंग दिखाई थी अटेंशन मैकेनिज्म की, यू कैन पैक इट इनटू ए मैट्रिक्स एंड डू इट टुगेदर। ओनली थिंग दैट यू नीड टू बी केयरफुल इज जब आप क्यू के टी करेंगे, जब आप डॉट प्रोडक्ट्स निकालेंगे क्वेरी और की के, वो डॉट प्रोडक्ट्स फ्यूचर वर्ड्स के भी निकल आएंगे, तो वो हमने जीरो करने हैं। तो वो उसमें हम मास्किंग कर लेते हैं वो माइनस इन्फिनिटी करके, और बाद में हम जब सॉफ्ट मैक्स लेंगे तो खुद ही जीरो हो जाएंगे। ठीक है। एंड देन द रेस्ट ऑफ द डब इज सिंपल, यू कैन से एक्सटेंशन ऑफ वेक्टर टू मैट्रिक्स कंप्यूटेशन। ऑर्डर भी वही रहता है, वी हैव यूज्ड द वेक्टर्स इन द सेम ऑर्डर एज द मैट्रिसेस, तो मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर भी वही रहेगा। ठीक है। अल्फा इंटू वी फॉर एग्जाम्पल
Q into K and so on, जो हमने पहले वेक्टर्स में किया था. So if you have multiple attention heads, as I said, then ये सारी computation separately होंगी for each attention head. अब जब हर attention head का output आता है, you concatenate them and usually you have to pass it through another linear transformation so that it comes back to of size D. So remember, ये हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है हर एक टोकन का वो dv साइज का है. So if dv size is not equal to, and then of course you have a attention mechanisms multiplied by number of heads. ठीक है. So this can be different from d. ठीक है. Concatenate कर रहे हैं, so concatenating the output. अब ये वेक्टर it might be different from d, so you have to bring it back to d size. तो एक और आप ट्रांसफॉर्मेशन टिपिकली करेंगे. Whatever this vector is, I have not given a notation to it. You basically multiplied with another matrix wo, so that it to make it of size d. ठीक है. जिस हमने पहले q k v के लिए computations की थी, यहाँ उसी तरह की computation कर रहे हैं so that we can bring the vector that we are inputting by concatenating back to size d. So हम size d हमेशा रखेंगे so that we want to make sure कि our transformer is modular. एक output दूसरे पे जा सकती है without any major change. And then of course you have this additional parameter w that you need to learn, wo output. Okay, so so again I would recommend everyone to go through this lecture as well as the book, because this is something that you will have to go over a couple of times before you will follow the notation. It's fairly easy. Book में वैसे आप सीधा कर दिया काफी. In the previous years that I taught this concept, उसमें notations के भी issues थे, other issues थे, but now it's very consistent. कोई इसमें issue नहीं. Of course notation overloading हो रही है, एक notation multiple जगह पे use हो रही है, but book में since you have description आपको बेहतर समझ आ जाती है. But otherwise कोई error कोई नहीं है. ठीक है. Okay, now let's try to wrap up our discussion. So when you process all of this information through a transformer, number of transformer blocks, the last output of the transformer block, which you can, let's say, is a matrix hi, small hi is for one word, so all of them we can put it into a matrix H, and let's say this is output of last block. ठीक है. And it has all the n input tokens. So now you can use this for your applications, and of course use it based on the application. You can train your model. So language modeling लिए हम बात करें तो जो हमारा nth token होगा, so that will contain information of all the previous tokens, and you can use that to predict the next token. So in other words, उस token का जो output है उसके बाद आपने एक basically language head लगाना है, language classification head लगाना है. ठीक है. So that head would then take that output hi of the final transformer and give you a distribution over the entire vocabulary. अब उसमें से फिर आप ट्रेनिंग में आप चेक करें कि वो वाकई वही है, नहीं है तो लॉस बनेगा, लॉस होगा तो वो बैकवर्ड ट्रांसपोर्ट होकर सारे पैरामीटर चेंज होंगे. ठीक है. सो दैट्स हाउ यू ट्रेन द मॉडल. सो बेसिकली जो मैंने अभी मैट्रिक्स लिखा है, इन अदर वर्ड्स, सो स्मॉल कैपिटल एन, सो कैपिटल एच जो लास्ट जो nth का जो टोकन था, सो so this passes through
a language modeling classifier. ठीक है? So only this token, because this is the last token, it has information of all the previous tokens. This goes through the language modeling and this is used to predict the next word. ठीक है? अब नेक्स्ट वर्ड आपके पास एक्चुअल ट्रेनिंग में भी है, आप वो कंपेयर करेंगे, लेट्स से वो एरर आ रहा है तो वो पे बैक प्रोपोगेट होगा। बैक प्रोपोगेट का मतलब ये होगा कि सारे जो पीछे पैरामीटर्स थे, डब्ल्यूज जो आपने देखे थे, वो अपडेट होंगे। एंड यू कंटिन्यू इन दिस फैशन, सो दिस इज हाउ यू डू ट्रेनिंग। ठीक है? And let's say if you want to use this model for language generation, again you give it a context आप देंगे, n words देंगे आपको, that nth word का जो output होगा, this will be the output distribution for the next word. ठीक है? उस पे जब आप लगाएंगे, वही लैंग्वेज हेड से गुजारेंगे, इट विल गिव डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द वोकेबुलरी, और वहाँ फिर आप वही ग्रीडी करेंगे सैम्पलिंग, या आप टेम्परेचर सैम्पलिंग करेंगे, या टॉप के सैम्पलिंग करेंगे, या न्यूक्लियस सैम्पलिंग करेंगे टू गेट द नेक्स्ट वर्ड। ठीक है? सो दैट वुड बी जनरेशन। ट्रेनिंग में ऑफ कोर्स लॉस होगा, लॉस फिर बैक प्रोपगेट होगा एंड अपडेट द नेटवर्क। So the process is the same for feed forward neural network as well as for the transformer. वो change कोई नहीं है, क्रॉस एंट्रोपी लॉस होगा at the end of the day, and that loss is then propagated back to adjust the network. Okay, let me move to the slides so that I want to wrap this up today. Okay. So all of this stuff is also given in the slides. Slides, I think, is a fairly faithful representation of the book. We have discussed all of these. We have talked about token and position embeddings as well. So now let me briefly talk about these scaling laws. So as we said in the beginning, large language models nowadays are based on transformers, and these transformers are quite large. They are massive, in fact. Okay? And people have come up with some guidelines on how the performance of the transformers would uh, be impacted by changing the size or some parameters, key parameters or parameter of the transformer. ठीक है? So इसमें so the performance of a large language model depends on three key things that people have mentioned. One is the size of the transformer or the large language model, which would be the number of parameters. We can call that n, okay, or denoted by n. So model size, number of parameters. And the second is the data set size. So how big is the data set on which you have trained the model? And we can call this the D, parameter D. And then the computing power that is needed, or the number of epochs that are needed to train the network. So we can call that C. So you can, of course, there are other issues as well, but
The idea that we want to discuss here is that how does the performance of a network varies when we vary these parameters. Let's say हम number of parameters increase करते हैं तो performance of network का क्या होगा. हम computational cost बढ़ाते हैं, meaning that we run it over more number of epochs, performance पे क्या होगा, या ज़्यादा data लेते हैं तो performance पे क्या होगा. So people have come up with rough estimates because we can't really uh, do lots of empirical analysis because these networks are huge. Training करने के लिए आपको massive computational power चाहिए, lot of time चाहिए, and so on. So there are a number of scaling laws, but most laws are of the powered law type. Uh, and these laws are some of them are shown here, but these are independent, meaning that number of parameters के base पे आप देखना चाह रहे हैं तो क्या होगा, independent of the other two. So number data sites पे देखना चाह रहे हैं independent of the other two, and similarly compute cost के देखना चाह रहे हैं independent of the other two. So the relationship is very straightforward, meaning that you have a constant. For example, if you talk about number of parameters, nc is a constant divided by n, which is the number of parameters whole a power alpha. That alpha is also a parameter of this equation. So since n is in the denominator, what happens? Meaning that as n increases, the loss of the model will decrease. Loss is of course the error of the model will decrease. और ये exact nc या alpha c क्या होंगे, ये you have to estimate them based on your actual settings. Small model लेके आप उसको analyze करके ये parameters fix कर लें, and then you can use these equations to estimate the loss for a model with n number of parameters, where n of course could be very large, could be very small. So similarly, same equations for data size as well as for compute cost. Of course, constants change हो जाएंगे. DC and of course CC would be different, and alpha C and uh, alpha D would also be different. ठीक है? So that's about scaling, and uh, this is useful in practice because, as I said, you can't really run whole experiments to determine के loss क्या होगा. We need to have estimates beforehand. So you can also estimate the number of parameters in a transformer or in a large language model quite easily. This slide shows a simple approximation. So let me show you actually. So number of parameters. So parameters हैं क्या? I mean, just wanted to get your feedback. So उसमें parameters आपके पास क्या थे? W, Q थे, ठीक है? W, K था, W, V था, and also sometimes WO as well. ठीक है? But this is for one attention mechanism. So you have multiple attentions. ठीक है? Multiple attention heads होंगे. So let's say A attention heads हैं. So हर एक you have to multiply A with the sizes of these matrices. That's one thing. Secondly, आपके पास एक feed forward neural network भी है. उसमें दो vectors हैं, W1 और W2 है. दो matrices हैं, parameters हैं. ठीक है? And this together is one block. कितने blocks हैं? वो L blocks हैं. ठीक है? So if I want to write it in words, आपके पास क्या होगा? The number of blocks times number of parameters per block. ठीक है? अब नंबर ऑफ पैरामीटर्स पर ब्लॉक में क्या है, उसके अंदर मल्टी हेड अटेंशन है और फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है. ठीक है?
So if you use some approximations, जैसे उसने slide में दिखाया हुआ है, then you can simply approximate it using this into L, number of layers or blocks, into D square. This is an approximation. एग्जैक्ट निकालना है तो जो मैंने ऊपर तरीका बताया उस तरह हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली. ठीक है. D is what the model size, right? L is total number of transformer blocks. ठीक है. And they have computed this for let's say GPT 3, जिसमें मेरे ख्याल से आपके पास ये 12 इंटू 96 ट्रांसफार्मर ब्लॉक्स थे इसमें. और उसका मॉडल डायमेंशन था 1288 समथिंग था, 1288 था या समथिंग लाइक दैट, या 12,000 समथिंग था मेरे ख्याल से, 12,800 स्क्वायर. सो दिस इज गोइंग टू बी अ लार्ज नंबर. ठीक है. सो 10 to the power 11 बिलियन होता है 9, सो ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन. 11 क्या होगा, 6 मिलियन है, 9 बिलियन है, ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन. ठीक है. सो मेरे ख्याल से वो मैंने डी का साइज बड़ा कर दिया, बट डी का साइज आप करेंगे तो दिस शुड बी इन द हंड्रेड्स, इन द बिलियंस. ठीक है. सो दिस इज अप्रोक्सीमेट फार्मूला, बट यू एज आई सेड फॉर ऑल मॉडल यू कैन यूज द एग्जैक्ट फार्मूला. आपको एग्जैक्टली पता है क्या चाहिए. ट्रांस अटेंशन मैकेनिज्म है, उसके साइजेस पता हैं और कितने अटेंशन हेड्स हैं, और फिर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में 2 हैं सिर्फ, एंड देन कितने ब्लॉक्स हैं, सारे आप ऐड कर दें तो देन दिस विल बी द साइज और द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन द मॉडल. ठीक है. I think I'll skip this KV cache thing. The idea here is basically we want to optimize our transformer models, and some computations can be stored in the cache, especially when we are doing inference or decoding. ट्रेनिंग के लिए नहीं, ट्रेनिंग में तो आप पैरेलल में कर सकते हैं, बट फॉर इन्फ्रेंस जब आप जनरेशन कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको रिकम्प्यूट करनी पड़ती हैं, बिकॉज ईच वर्ड इज जनरेट वन एट ए टाइम, सीक्वेंशियल है. तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ चीज़ें आप प्रीवियसली जो कंप्यूट की थी वो आप कैश में स्टोर कर लें एंड री यूज इट. So this is what they're talking about. Okay. Now, fine tuning. So let's say you have already trained a large language model. So fine tuning essentially means that you are changing the parameters of that model so that you can learn something different. ठीक है. Usually क्या होता है, let's say आपके पास कोई large language model है, जैसे लामा है या जीपीटी है या कोई भी है आपके पास. It has been trained on its own loss function for language generation. But let's say आपने उसको क्लासिफिकेशन के लिए यूज करना है. Remember at the last step that I said we have it, you can put it output layer. Output layer language modeling layer हो सकती है, classification layer हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. So maybe you want to classify a very specific type of problem. Let's say sentiment classification करना चाह रहे हैं, या email classification करना चाह रहे हैं, emotion classification करना चाह रहे हैं. So you want to adopt the model. So adopt the model के लिए usually will not adopt the whole billions and billions of parameters. So we will want to do it in a better way. So there are various options there. Uh, the simplest option is जो last layer है जो आपकी, वो ही सिर्फ adopt करें, which is the output layer. So adopt the output layer for fine tuning only to a new problem. ठीक है. So previous जितने भी W's थे, attention mechanism था, सब कुछ था, वो नहीं adopt करेंगे. Simply जो last आपका जो feed forward output layer थी वो आप adopt कर रहे हैं. ठीक है. To make it efficient. But let's say if you want to adopt all the others as well, तो इसमें इस slides में, book में method दिया, which is also used quite popularly, is called low rank adaptation, which is basically called LO rank adaptation. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, remember we have all those parameter W's, WQ, WK, WV, WO, W1, W2, ये W's हैं हमारे पास. ठीक है.
what we do is we approximate this W by A and B, A multiplied by B, where A and B are matrices also. ठीक है, so A जो matrix होगा, so let's say मैं W एक लेता हूँ, W मेरा let's say WQ है, होगा इसका साइज क्या होगा, D इंटू DK, ठीक है। सो देन A मैं डिफाइन करूंगा D minus DK, right? So I will define A as D into some small value R, and B as R into some value DK, the DK, where R is small. R is much less than D and DK. ठीक है, so usually it can even be 2, 3 or 4. So in other words, आपका जो A और B matrix हैं वो बहुत छोटे छोटे matrix हैं, and we are approximating our big matrix by the multiplication of these two matrices. जब हम अपना ट्रांसफॉर्मर अडॉप्ट करेंगे, सिर्फ इतने थोड़े पैरामीटर्स हम अडॉप्ट करेंगे। सो लेट्स से मैं कुछ नंबर्स ले लेता हूँ, लेट्स से डी मेरे पास 512 है, ठीक है, डी 512 है, और लेट्स से डी के भी मैं कहता हूँ 512 है, ठीक है। सो मेरा डब्ल्यू जो होगा वो कितने का साइज होगा, 512 स्क्वायर, ये साइज होगा, ठीक है। सो लेट्स से मैं आर इज इक्वल टू लेट्स से सिंपली 2 लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ए का साइज क्या होगा, 512 इंटू 2, और बी का साइज क्या होगा, 512 इंटू 2। सो 1024, 1000, सिंपली 2048 अपने पैरामीटर्स अपडेट करते हैं, rather than the large number that we had before, ठीक है। अब जो अपडेट ये हो जाएगा, we simply add it to my original W as we do the updating. So this is called low rank adaptation, ठीक है। So we approximate each parameter W with some two matrices A and B, और वो matrices हम छोटे ले लेंगे, and their multiplication will lead to an approximation of W, और ए एंड बी को हम अपडेट करेंगे ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग और फाइन ट्यूनिंग, एंड वंस हमने ए और बी अपडेट कर दिया, वो हम इसमें डब्ल्यू में ऐड करते जाएंगे या अपडेट डेल्टा उसमें डालते जाएंगे, ठीक है। सो आई थिंक वी हैव ऑल रन आउट ऑफ टाइम, सो आई विल स्टॉप हियर। So once again, just want to remind you, please go over this chapter, and this is an important chapter. We did not include it in the mid, but it is certainly going to be a major component of the final. So spend time on this, and if you have any questions, you can come and speak with me or the TAs, ideally with me, so that, and of course refer to the book. Book is, I think, fairly decently written. उसमें issues कोई नहीं है, तो वो follow कर सकते हैं।